एंड 256 फॉर 8 ये इंडिया ने बनाया है। एक पॉइंट पे लग रहा था मुस्कान कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश 300 तक पहुंच सकता है, जिस हिसाब से उनकी बैटिंग जारी थी। एक सेकंड में रुकना चाहूंगा प्रोड्यूसर जी, हम मेरी आवाज आ रही है आपको? एंड दर्शकों को आई होप मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ इशू आ रहा था। बट कंटिन्यूइंग फ्रॉम इट, एक पॉइंट पे लग रहा था जब बांग्लादेश के ओपनिंग बैटर्स ने जो स्टार्ट दे दिया था कि 300 बन जाएंगे, लेकिन वहां से इंडिया ने पुल बैक किया है। और एक बहुत ही अच्छा कमबैक किया इंडिया ने, जबकि इंडिया वॉज शॉर्ट ऑफ वन बॉलर, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट संदीपन सर लाइव फ्रॉम पुणे। उसके पहले वो जुड़े, बट लेट्स टॉक Yeah, अबाउट but द I गेम। think one thing that we really need to talk about is how well the openers from Bangladesh were. Both of them scored like a half century. Tanzim Hassan had 51 and Litin Das scored 66, which was a really good start. Yes. And I think it was, as you mentioned, it was around that time he laga ki, things are getting tough. Exactly. India's Especially in a one bowler tough shot. spot. Exactly. India's in a tough spot considering कि Pune का जो ground था, जो pitch थी, that was a run scoring pitch. And we did see a lot of fours and sixes being hit, I think, at every nook and corner of the ground. So I think at that point of time, it felt ki, wicket kab aayega. Until Jadeja came in, he provided us with it was Jadeja, right, who provided us with the first breakthrough, if I'm not wrong. बट हमारा इशू यही है कि एक बार हम दर्शकों को ये भी बता देता हूँ कि अभी मेरे ख्याल से संदीपन सर जुड़ने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपके जो सवाल है वो हमारी तरफ आप देखते रहिए। और क्या बोलते हैं, रियली होप कि पहले कुलदीप यादव ने दिया था बाय द वे। एंड टॉकिंग अबाउट द गेम, और हम जडेजा की आप कीजिएगा, एक बार हम हार्दिक पांड्या की बात कर लेते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या पहले ही ओवर में अपने इंजर्ड हो गए थे। बाय द वे, सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था कि हमारे राइट आर्म क्विक बॉलर उनको रिप्लेस किया था विराट कोहली ने। उन्होंने 3 बॉल डाली और अच्छा ओवर डाला। Imagine how lucky the crowd would be. You've gone to see India bat, and then suddenly Virat Kohli is bowling after 6 years. And to just 3 balls, you've got to have some completely different. मेरा जेन्युइनली मन था कि विराट कोहली 1-2 ओवर और डाले, क्योंकि शार्दुल बॉस टुडे वो अपने लय में नहीं दिखे थे। आई रियली वांटेड विराट कोहली 1-2 ओवर और डाले, ताकि थोड़ा हमारे वहाँ पे जो व्यूअर्स है स्टेडियम में और यहाँ पे वन क्रिकेट के व्यूअर्स, हम सबको मजा आ थोड़ा सा। बट नॉनदलेस, लेट्स टॉक अबाउट हार्दिक इंजरी। ही लिम्प्ड ऑफ द फील्ड, काफी सीरियस लग रहा था उस टाइम पे वो। एंड बीसीसीआई का जो उसके बाद प्रेस रिलीज आया था, उनकी जो इन्फॉर्मेशन आई थी बीसीसीआई की तरफ से, वो ये था कि हार्दिक वोंट बोल इन दिस इनिंग्स। तो वो यही हुआ। बट बाय द वे, हार्दिक वाज बैक इन द वेन्यू, मतलब वो स्कैन्स के लिए गए थे। स्कैन रिपोर्ट्स आर येट टू कम। हार्दिक पांड्या स्कैन्स के लिए गए थे, ही इज बैक इन द वेन्यू। सवाल ये उठता है कि क्या अब हार्दिक पांड्या बैटिंग करेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। Because if he doesn't, India's going in with just 5 batters. हाँ, अब हार्दिक, सॉरी, जडेजा इज एन ऑलराउंडर, तो हम 5 बैटर्स लेके चल रहे हैं। 5 batters हो गए। And when we talk about Yes. Am I audible? Yes, sir, you're also audible. We were just talking about Hardik Pandya and his little mishap that he had during the 9th over today. And sir, हमारे जो विमल सर है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि हार्दिक पांड्या इज बैक इन द वेन्यू, बट ऑब्वियसली ही डिडंट बोल आफ्टर दैट मिसहैप। बट डू यू थिंक ही विल बैक? अगर वो बैक नहीं करे तो क्या ये टोटल, which still looks an average total on the board, will it become a bit tough because आप एक बैट्समैन शॉट हो गए अगर वो नहीं खेले तो? Any updates from Pune? Look, I think we have to think about the larger perspective now, and Hardik Pandya's presence in this Indian ODI setup, I mean, his importance is immense, right? Because he adds a lot of balance in this team. He can be your third pacer if needed. We have seen that in some of the matches, he was asked to bowl before Shardul Thakur, who was the designated third seamer. So yes, Hardik Pandya's, and with the bat also, we all know what he is capable of. So overall, if you ask me, we have to think about the larger perspective. Even if he doesn't, he takes no part in this game, that is all right. But his fitness is very, very important for the Indian team going into the business end or in the second half of the tournament. So I don't think the team management will take any sort of any risk with him. Yes, he is back.
he has his scan done in the Pune city. हम्म, Reports are we are waiting for the reports. लेकिन मुझे he is at the ground right now. But I am not sure कि whether he will bat or not क्योंकि उनका ankle twist हम्म, हुआ है, landing foot उन्होंने जो है वो हम्म, हुआ है, और उन्होंने एक्चुअली ट्राई किया था बहुत देर तक, उसने आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्राई किया था ग्राउंड पे रहने का, बट ही वाज अनेबल टू वॉक. सो हम्म, मुझे नहीं लग रहा है कि इस मैच में हार्दिक पांड्या अंटिल अनलेस इज हार्दिक वेरी मच रिक्वायर्ड के मतलब लास्ट विकेट या बहुत मतलब अंटिल अनलेस इज हम्म। वेरी मच रिक्वायर्ड, मुझे नहीं लग रहा है कि हार्दिक पांड्या विल टेक एनी मोर पार्ट इन दिस गेम. सर आपने वो जो इंसिडेंट था हार्दिक पांड्या वाला आपने क्लोजली देखा है, डू यू थिंक आई पर्सनली फील इस मैच में तो आई डोंट थिंक सो अनलेस एंड अनटिल इट्स नीडेड, जैसा आपने कहा है कि हार्दिक पांड्या बैटिंग करेंगे, बट डू यू थिंक ही इज गोइंग टू मिस अ कपल ऑफ गेम्स क्योंकि इंजरी लुक्ड अ बिट सीरियस, उनके जो एक्सप्रेशंस थे दैट लुक्ड अ बिट सीरियस, डू यू थिंक ही विल मिस अ कपल ऑफ गेम्स? अब देखना होगा, स्कैन के रूप में रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. समटाइम्स एंकल ट्विस्ट होता है, उसमें टीयर नहीं भी निकल सकते. इट इज नॉट कि एंकल ट्विस्ट होने के बाद टीयर ही निकलता है, बट हाँ we have to wait for the scan report. I think it is at this point it will be very premature to predict anything. उससे Let's wait for the scan report. I'm sure we'll get it by the end of this game. Then we'll definitely ask the whoever will come to the press conference, we'll definitely ask about him. Or so let's see what happens. What is the team management गॉट assessment of his injury? एंड सर 256 is what Bangladesh have made. कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील, अभी हम ये बात करते हैं मुस्कान में कि ऑन दिस फ्लैट ट्रैक आई गेस देयर एट लीस्ट 50 रन शॉट बांग्लादेश, स्पेशली आफ्टर द स्टार्ट दैट दे गॉट. योर टेक ऑन दैट? Absolutely. I think you have to give credit to the Indian spinners in the middle of it. The way एब्सोल्युटली. first Kuldeep broke that partnership, opening partnership, which was looking quite threatening. And after that, the way the spinners have bowled and they haven't allowed the Bangladeshi batters to, get going. In the middle overs में क्या होता है कि अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो दे देन अगर स्पिनर्स को भी डोमिनेट कर देता है तो फिर वो एक मोमेंटम बन जाता है बैटिंग साइड के लिए. लेकिन वो मोमेंटम आज बिल्ड हमने करने नहीं दिया. हमने सेकंड हाफ में जो यस. बॉल विद द बॉल वी हैव मेड अ वेरी गुड कमबैक. आई थिंक सो या आई थिंक ऑन दिस विकेट, ऐसे विकेट पर अगर अपने आपके स्पिनर्स नॉट ओनली रन रोकते हैं, वो विकेट्स भी लेते हैं और ओपोनेंट टीम को एक दे केप्ट द ओपोनेंट टीम एट बे. तो यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द स्पिनर्स. अब देखना होगा कि सेम बांग्लादेशी स्पिन अटैक भी बहुत अच्छा है. they are and they have, as we have said, that they are playing an extra left arm spinner. So यस उनके खिलाफ इंडियन टीम कैसे परफॉर्म करता है ये भी देखने वाली बात होगी. एंड हम बॉलिंग की बात करते हैं हमेशा, हम बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन आज जो हमने इंडिया फील्डिंग देखी है, मतलब हम देखते हैं कि पोस्ट मैच पीसीसीआई वीडियोस अपलोड करता है बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच. आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो कंटेंडर्स थे. I think I'll vote for KL Rahul's catch. Yeah, it was just like last time. I think KL Rahul won the best fielder अगेंस्ट award पाकिस्तान. last time as well. Yeah. यस. He was really good, especially the catch that he literally flew to the other side and he caught the ball. Absolutely. एंड जो हम देख रहे थे ब्रॉडकास्टर्स ने एक विजुअल डाला था कि ही हैड इवन लेस देन 1 सेकंड टू रिएक्ट फॉर द कैच. तो उसमें विद पैड्स ऑन आप डाइव मार रहे हो, आई टुक अ ब्लाइंडर. तो आज गुड Absolutely. साइन फॉर द इंडियन टीम Absolutely. बिकॉज कैचेस विंस यू मैचेस. सो ये हम बहुत सालों से सुनते हैं. एंड थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सर बांग्लादेश बैटिंग की, बिकॉज इवन द ओपनर्स गिव अ गुड स्टार्ट. कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था जब तानजिद मारने लगे थे. योर टेक ऑन देयर बैटिंग कि डू यू फील कि दे मिस्ड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर अ बिग टोटल अगेंस्ट दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप? Yes, I think they have missed a chance. I think क्या हुआ ना, जब उसके पास विकेट गिरने लगे और शकीब भी उनके मिडिल ऑर्डर में जो नहीं था, तो उसका एक डर मुझे जो लगा हाँ. बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप में आज दिखा. दे वर वेरी ऑन द बैक फुट. जैसे जैसे विकेट गिरने लगे, आई थिंक बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट थॉट ओके ऑन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या होता है कि दे न्यू के साकिब है, ही विल टेक केयर ऑफ द मिडिल ऑर्डर. लेकिन यहाँ पर वो नहीं थे, तो उसका जो एक खामियाजा है आज बांग्लादेश बैटिंग को देख पाए हैं हम. अदरवाइज आई थिंक दिस could very well been a 280 or 300 plus trophy. एग्जैक्टली. एंड एक सवाल जो मेरा था सर आपसे, ये वो यही था कि आप मैच क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो और डू यू थिंक पिच कहीं ना कहीं बेटर होगा
बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। एंड हमने जो पिछले मैचेस भी देखे जो हुए थे और इंग्लैंड के साथ जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी पुणे में alongside Kedar Jadhav, the pitch really got better as the game progressed. Do you think the similar thing can happen? The pitch will get better? That's what the Indian team is hoping for, because Rohit Sharma ने टॉस में कहा था कि he would have fielded first. I think yes, it will get better under lights. Ball will ऐसे भी बॉल बहुत अच्छी तरीके से बैट में आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि और भी ये बेटर होगा। और जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं वो बहुत जो पिकअप शॉट्स हैं, जो ऊपर से जो खेले जाने वाले शॉट्स है, आई थिंक you will get value for your shots over here. So yes, I am expecting the wicket to get better for batting, but थोड़ा सा जो है wicket पर pace भी बढ़ेगा। And I believe जो मुझे लग रहा है यहाँ पर obviously India will play India is playing their cricket on a certain way, but we have to be very careful कि early wickets हमें बांग्लादेश पेसर्स को नहीं देना है, क्योंकि उनका स्पिन अटैक अच्छा है। तो we should not lose early wickets up front, नहीं तो फिर मिडिल ऑर्डर हार्दिक absence will also play a role, of course. So मुझे लग रहा है कि आज maybe I have a feeling, I don't know, they may play a little more, they will be a little more circumspect, the Indian openers. They might be, because आपका आज एक प्रेडिक्शन गलत निकला। आज आपका जो फेवरेट बैटर आपने चूज किया था, he didn't perform, Tauhid Hridoy. Yeah, but Liton Das did. But I think it's the first time your predictions have been wrong. Liton Das did. One prediction Sandipan sir got right today. Liton Das looked good, but obviously he tried to accelerate और उसी में वो out हुए। But I think he paid the price for others, because दूसरे तरफ से भी रन भी नहीं आ रहे थे, and they were losing wickets as well. He was the one who was trying to continue the momentum, और उसी वजह से वो आउट भी हुए। उन्होंने एक स्वीप जडेजा को मारा था, ओवर कवर स्वीप भी मारा था, and he looked good. But आपकी बात एक और बात सच्ची है सर, क्योंकि शायद वो पावर हिटर्स मिसिंग है बांग्लादेश टीम में, because despite this good start, एक पॉइंट ऐसा था कि they were going at 4.5 runs per over despite the good they lacked, which is pretty conventional. Yes. Yeah, actually this is all because of the absence of Shakib. जब देखिए बांग्लादेश क्रिकेट में शकीब का जो स्टैचर है, ये बहुत बड़ा स्टैचर है, बहुत बड़ा नाम है। और कभी कभी जब वो नहीं रहते हैं प्लेइंग 11 में, स्पेशली अगेंस्ट प्रेशर गेम अगेंस्ट इंडिया, और आपको पता है कि बांग्लादेश जो है जब भी इंडिया के सामने खेलते हैं, वो दे वांटेड टू गिव देयर बेस्ट, इवन मोर देन 100%, दे वांटेड टू परफॉर्म, बिकॉज बांग्लादेश में जो है इंडिया गेम को सबसे बड़ा गेम माना जाता है किसी भी मल्टीनेशनल इवेंट या बायलैटरल में। तो उस गेम में अगर एक शकीब जैसा बड़ा प्लेयर नहीं है, तो वो जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर आज उनके बैटिंग पे मुझे लग रहा है कि दिखा, एंड इट रिफ्लेक्टेड ऑन देयर बैटिंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे वर बिट मोर सर्कमस्पेक्ट। थोड़ा सा दे वर लाइक ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर विकेट्स, एंड मे बी दे वांटेड टू अटैक इन द लास्ट 10-15 ओवर्स, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि इंडियन स्पिनर्स ने, उसके बाद पेसर्स ने भी जो है हमें बढ़िया आई थिंक दे मेड अ वेरी ब्रिलियंट कमबैक आफ्टर लीकिंग रन्स विद द न्यू बॉल। Yes, absolutely. And कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मेरा था, which is related to this match also and in the upcoming games also. When the likes of Bumrah has done exceptionally well, Jadeja, Kuldeep, कहीं ना कहीं, this is my personal viewpoint, I feel कि कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर lacked that cutting edge. कि I'm not sure, but maybe he does lack that cutting edge. And do you see any changes for the next game? I know we are talking about the Bangladesh game, but do you see him getting axed from the next game, and maybe someone like a Shami or Ashwin coming back? Because Shardul इतने effective नहीं लगे हैं in all the games that he has played so far. I have been saying this for a long time, since the Asia Cup, that आपको Shardul ideally should not be a part of your first choice bowling attack. Shardul is a backup seamer, और एज ए बॉलर उसमें उन्होंने कुछ परफॉर्म ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बट आई डोंट थिंक, नोइंग दिस इंडियन टीम मैनेजमेंट, आई डोंट थिंक दे विल मेक ए चेंज। अब देखना होगा हार्दिक की भी अपडेट्स क्या आते हैं, क्योंकि फिर आपको हार्दिक अगर नहीं खेल पाते तो फिर प्रोबेबली सूर्या विल कम इनटू द 11। तब आपको जो अपना जो कॉम्बिनेशन है वो फिर थोड़ा सा जो है उसको चेंज करना होगा। उसमें आपका 6 बॉलर क्या होगा, उसका भी ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि शमी का चांसेस, एक्चुअली शमी's chances has become more bleak, I think because of this freak injury of Hardik.
But yeah, Do you you are think they can? absolutely right. Yeah. Hardik as a bowler, as Hmm. Shardul as a bowler, उनका फर्स्ट उसका रोल है बॉलिंग. आई थिंक Hmm. उन्होंने एज ए Hmm. बॉलर कुछ परफॉर्म ज्यादा नहीं कुछ नहीं किया. Yes. And I guess one last question before we sign off, क्योंकि आई एम श्योर थोड़े टाइम में मैच स्टार्ट होने वाला होगा एंड संदीपन सर हैज टू गो बैक. Sir, in how many overs do you think India will love to chase this total? And do you think another 100 from Rohit Sharma is coming? Because 15 में उन्होंने सेंचुरी मारी against Bangladesh, 19 में मारा. Will he love to? He would love to have He a hat loves trick to or manage something. Bangladesh, so I think we might see him hit another century today. Well, if you ask me, I would want him to, score runs. Probably 100, of course. देखिए विकेट तो रोहित जो इंडियन टॉप ऑर्डर बैटर्स है उनके लिए आइडियल विकेट है. बॉल बैट पे आ रहा है. विकेट विल गेट हाँ. बेटर ऑल्सो. यहाँ पर बांग्लादेश पेसर्स के पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और उतना हम्म. पेस भी नहीं है कि वो जैसे कि आपने देखा कि इंडियन टीम में हिट द टेक जो बॉलर्स है उसने बांग्लादेश को ट्रैवल किया. लेकिन हाँ. बांग्लादेश बॉलर्स के पास पेस फास्ट बॉलर्स के पास वो पेस नहीं है. अपार्ट फ्रॉम तस्किन, बट तस्किन भी थोड़ा सा वो कभी कभी जो है दे वर लाइक वेवुड एंड ऑल. तो मुझे हम्म. लग रहा है कि इट्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन बैटर्स टू फिनिश दिस एज सुन एज पॉसिबल. बट एज आई एम सेइंग, मुझे ये गट फीलिंग भी है सिंस हार्दिक अवेलेबिलिटी इज अंडर स्कैनर. तो थोड़ा सा जो हम्म. है सर्कमस्पेक्ट आपको लग सकते हैं. बट आइडियल, बट let's just win this game as soon as possible. हम्म. I think by 45 45th over we should be, You should. but you never know. But looking at the, looking at हम्म. that England chase against Afghanistan और South Africa का Absolutely. भी जो chase Netherlands के खिलाफ, तो हम थोड़ा सा we have to be very careful as well in with our predictions. Absolutely, sir. So, अभी का लाइव सेशन हम यही एंड करते हैं, सर. And it was again, as usual, it was lovely talking to you. And Thank you. we just hope कि जब next, अभी जब मिले हम वापस, तो India has already India has won the already won match the by match, 45 and overs. we should have a big smile on our faces. So, thank you so much, Okay, Sandeep, sir, for joining us. जाते एक हाँ. मैं just I want to make a bold prediction. I Yes, think yes. Shreyas Iyer will be Yes, the highest please. scorer for this. Shreyas Iyer will score the most number of runs from the Indian team today. And he loves to play spin. He's a great player of spin bowling. That's So, that's the give reason his why I prediction am built on saying, those. yeah. He's due also. He's Thank you due so also. much. He's itching to, prove Yes, his yes, yes. selection, prove his critics wrong. Hmm. So yeah. Absolutely, Thank absolutely. you. So, Thank you. maybe Shreyas Thank, Iyer. So, thank you, sir. thank you, sir, Thank and you. Thank you. thank you all the users. आप जुड़े हमसे और आप मैच एंजॉय करिए एंड होपफुली आज श्रेयस अय्यर जैसे सर ने बोला है उनकी प्रोडिक्शन आज सच हो जाए. सो एंजॉय द मैच, एंजॉय द सेकंड इनिंग्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.